Good morning, students. Myself, Vijendra Chauhan from Srinarayan Vidyalaya, Kanhan, and I am your maths teacher. And today we are continuing with the chapter 4 Operations on Fractions. Operations on Fractions. So, here in our previous lecture, we completed practice set 11. Now, today we are beginning practice set 12. In practice set 12, multiplication is there, multiplication of fractions. So, first 7 upon 5 into 1 upon 4. 7 upon 5 into 1 upon 4. So, this is the problem of multiplication. ये multiplication का problem है. So, students, इसे आप कैसे solve करेंगे? It is very simple problem and the solution is also very simple as well. Look here. Solution. In solution part, you have to write this as it is. आपको जैसे दिए है वैसे ही लिखना है. 7 upon 5 into 1 upon 4. This is first step. ये पहली स्टेप है. फिर दूसरी स्टेप देखिए. 7 into 1. This is 7 and this is 1. And 5 into 4. 7 ones are 7 and 5 fours are 20. So this is your solution. This is the answer. Now next problem. Next problem of practice set 12. 6 upon 7 into 2 upon 5. 2 upon 5. You have to write this as it is here. आपको जैसा दिया है वैसा ही आप सॉल्यूशन पार्ट में लिखना है. सॉल्यूशन 6 upon 7 into 2 upon 5. Then second step 6 into 2. This is 6 and this is 2. 6 into 2 and 7 into 5. 6 2s are 12 and 7 5s are 35. So this is the answer, students. This is the solution. In the same manner, you have to solve this practice set. And now we are moving for the reciprocals or multiplicative inverse. Reciprocals or multiplicative inverse. Okay. Now we are doing reciprocals. Practice set 13. Here first problem. पहला प्रॉब्लम है आपको सिंपली 7 का हमको करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. तो सॉल्यूशन सिंपल है. जब भी हमको किसी वैल्यू को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है किसी फ्रैक्शन को, तो हमें 1 upon 7 लिखना पड़ेगा. 1 upon 7. यहाँ इसके ऊपर 1 लगाना इंपॉर्टेंट है. मान लीजिए अगर यहाँ 6 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1 upon 6. 1 upon 6. So this is the multiplicative inverse is given in your practice set 13. Now one another problem is given there. 11 upon 13. Second problem is 11 upon 3.
11 upon 3. You have to do multiplicative inverse, means reciprocal. How? Solution is right here in the inverse form. 3 upon 11 means denominator becomes numerator and the numerator becomes denominator. So solution is like this. Then we will move to the next question. Carry out the following divisions. Carry out the following divisions. Carry out the following divisions is the next question. Question number 2 of practice set 13. practice set 13 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन में क्या दिया है 2/3 डिवाइडेड बाय 1/4 सो हमको यहाँ ये जो डिवीजन दिया है इसे करना है। तो इसे कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने जो अभी पढ़ा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना पड़ेगा इस वैल्यू को, मतलब रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। देखिए सॉल्यूशन 2/3 and 1/4. You have to write this step as it is. ये आपको जैसा यहाँ दिया है वैसा ही यहाँ लिखना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में 2/3 यहाँ डिवीजन का हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। अब जब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये 4 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा। दिस इज 1 मीन्स ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सब अब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है सिंपली जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन किया था। 2 4s are 8 and 3 1s are 3. So 8/3 is the solution. Here in the multiplicative inverse, यहाँ multiplicative inverse में क्या होता है? डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाता है। Still if you are facing any doubt regarding practice set 12 and practice set 13, you can ask me by calling or simply leave voice message or text me on my number. So I hope you understand. Thank you.